spend some time. Yeah. Ready to talk, baby. Can be your rock, baby. Please come and sit with me or take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Subscribe. ClickATale. If you are in Bangalore, आपने तो विमेश्वरी के बारे में जरूर सुना होगा. An adventure and nature camp within 100 kilometers from Bangalore. But the question is, should we plan a day trip full with activities if there is senior citizens or toddler in the group? What is the stay and food option? Do we need to stay a night over there, etc., right? So in this video, let's explore Bheemeshwari with Tinni and her friends. You will get all your answers by end of this video as this is going to be well informative and exciting. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए. And चाहे तो you can thank us later as well. तो शुरू करते हैं our day trip to Bheemeshwari JLR Adventure and Nature Camp. Hello all, welcome to ClickATale. Here is Dipmala. And here is Shivash. And there is our daughter Tinni. Hi. So it's 7 a.m. and we are going to Bheemeshwari today, which is around 105 kilometers from our stay. And we are expecting to reach there by 10. Next 3 hours, yeah. Yeah, by next 3 hours. In this video, we'll share you all the details about Bheemeshwari Nature and Adventure Camp. We heard that there are lot of adventure sports are there. And it is not always necessary to stay in Bheemeshwari. You can plan a day trip like us. So keep watching. We'll share all the details to you. This time, this trip is very special because this time there are 3 kids. We are going with Tinni's friend. Good morning. Good morning. Hi. Good morning. Here is Pintu. Hello. Aparajita and he is cute Advik. Okay. Good morning, Varun. Good morning. Good morning. We are good already. खिड़की उतार लो थोड़ा. अच्छा. And Hi. Good morning. There is Kushbu and David. so to reach Bheemeshwari, we have to take nice road. So we have taken the nice road now, and after nice road, we'll go via Kanakpura road. Early morning drive to Nice Road is something we always enjoy. It's so fresh and beautiful. तो आपने तो बाहर का नज़ारा देख लिया नाइस रोड का. अब दिखाते हैं अंदर का नज़ारा. Hi. So both are sleeping now. तो जब तक सोते रहता है तब तक आई थिंक हम लोग ब्रेकफास्ट पॉइंट तक पहुंच ही जाएंगे. एंड जैसे वो उठ जाए, then She is full charged and she can enjoy the day with full energy. We have almost covered 60 kilometers and it's around 8:15 now. बहुत भूख लग गया तो अभी पहले कुछ खाते हैं, then फिर चलेंगे. आई थिंक उसके बाद हम लोग को और भी 45 और 50 किलोमीटर्स और जाना है. तो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट. ये रेस्टोरेंट रास्ते के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर है. तो अपने दोस्त वरुण कल रात से पूरा प्लान करके ये रेस्टोरेंट ढूंढ के रखा है. एज पर हिम द रिव्यू इज वेरी गुड. एक बार मौका कर देखते हैं खाना कैसा है. तो चलिए. hey, how is this idli? Idli? So-so. So right? ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपना जर्नी फिर से स्टार्ट किया एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टू द एंट्री गेट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दो दिस इज अ फॉरेस्ट रोड बट द रोड कंडीशन इज सुपर्ब. And you can come here with any type of car. Keep your eyes open, you might be lucky sometime. Like we were when we were traveling to Shivagiri Kshetra, a 300 years old temple deep inside Kaveri Wildlife Sanctuary.
Welcome to a Bheemeshwari. I am here with my friend. So we have reached Bheemeshwari Adventure Camp. तो अपना है डे ट्रिप का. अभी डे ट्रिप में अभी पहले हम लोग को उधर जाके उस तरफ जाके एंट्री करना पड़ेगा. चलो चलो, let's go. उसके बाद भैया हम लोगों को लेके चलेंगे कि क्या क्या है नेचर कैंप में, दिखाते हैं. चलिए. अच्छा, फर्स्ट वी नीड टू गो फॉर वेलकम ड्रिंक. हाँ, बाद में एक्टिविटी है, ये हाई रोप एक्टिविटी है. ओके. ये हाई रोप एक्टिविटी के बाद में लंच है. लंच के बाद में वाटर स्पोर्ट्स है. ये दो है. ये कायाकिंग कार्यक्रम है. ओके. कायाकिंग कार्यक्रम राइड में बाद में ये टी कॉफ़ी स्नैक्स 4:30 5 o'clock 5:30 के चेक. एंड इतनी सारी एक्टिविटीज विद फूड ओनली 2500 पर एडल्ट, काफ़ी बजट फ्रेंडली है. सो अभी एंट्री तो हो गया अपना एंड उस तरफ गाइड है. आई थिंक वी टू गो देयर, बट पहले तो वो दिखाता हूँ. देयर इज अ क्रोकोडाइल जस्ट वी सॉ हियर. दिस वन इज अ क्रोकोडाइल. So Pintu has done a very good research on crocodile. Jump and attack you. Crocodile will attack you only you are in the water or your feet in the water somewhere. Some body part is in the Body part there. But if you are in a boat or if you are in some above some surface, which is then they will not attack. तो मतलब सेफ है ना? We can go for. So you can आराम से do it. आराम से. No. Very But nice. पानी में हाथ मत डालो. Come on. Good going. Good going. खुशबू, come on. अरे यहाँ पे तो एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड ऑलरेडी और एनर्जी देखिए इन लोगों का. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑल किड्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इक्वली. अरे वरुण भी आ रहा है अभी, देखो ये वरुण. Being a parent, we often look for a place full with activities so that kids and we both can enjoy the day without worrying about food and accommodation. So this place has everything what we want. So zip lining is also there in this package. But kids are not allowed. Only 8 years and above are allowed. She's crying. Sure. Don't be sad. There is a small zip line for kids as well, जो तिन्नी एंड उसके फ्रेंड ने जम के एंजॉय किया. So Varun, nervous? No. You have done before? No. First day. So मैंने किया था वेनाथ पे. That was also very beautiful. वो green tea के gardens के ऊपर से. If you have missed that, link is there. Go and check that out. तू बता, nervous है? No, no. थोड़ा दिख रहा है. So I think this is the main activity over here, right? And इसके बाद शायद lunch and then coracle ride. These high rope activities will take around 35 to 40 minutes to complete, and some of them are really difficult as well. So be ready with comfortable shoe and clothes. Now time to complete these activities with full concentration and end में बताते हैं कैसा था हमारा experience. I think our excitement was enough to tell you how were these activities.
अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है then don't forget to subscribe our channel, ClickATale and click on the bell button so that you can get the notification of our upcoming jungle series. And also please like and share this video with your friends and families. So that one is Kaveri River, you know, and there are big coconuts at there. So nice, no, this place is. Yeah, beautiful. আমরা একদিন সমুদ্রে যাব মামা মামিকে নিয়ে একটা ললিপপ কিনে খেয়ে শক্তিটা আরো বেড়ে যেত জুস খেলে আরো শক্তিটা বাড়ে Now a quick tip for parents who want to travel with baby or toddler. Make sure your baby is wearing comfortable walking shoes since you will be spending a lot of time outdoors. And don't forget your hat, sunscreen, sunglasses, etc. It's better to keep some candy with you for instant energy. But do remember, no electronic payment is possible, only cash is accepted here. যদি একটা ললিপপের দোকান বসে প্যান্ডার দোকান বা ললিপপ तो हम लोगों ने अभी ये सब राइड्स ये सब खत्म किए and वो सब खत्म हुआ almost around 12:30 and now it's 1:20. So 1:30 से लंच है, so we'll have to quickly go and grab our lunch. बीच में 1 घंटा हमें मिला था to just rest, so we rested that time and now we are following this beautiful forest trail to reach the गोलघर. या जंगल लॉज का खाने के जगह का नाम होता है गोलघर. तो सामने भी बहुत सारे रिसोर्ट हम लोग जाने वाले हैं जंगल लॉज का. देखते हैं गोलघर सब जगह है या नहीं. एंड हर एक जगह पे ना ये पूरा ट्रेल पे फोटोज लगा हुआ है एंड तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड. वेल योर किड्स कैन रीड दैट, यू कैन आल्सो एडुकेट देम. তো ওইটা পড়ি বোর্ডিং হোয়াইট বার্ড ব্রেক আছে ওয়ান ডে নট গোইং water go the crocodile is beat you then you die a big fish big monster crocodile will beat you bite you then you dead or remind them she or elephant is here and everybody is dead. I think this is the गोलघर जहाँ पे अभी खाना मिलेगा. Go and So I see a lot of salads Go and and all collect here. it. Yeah, lot of salads. इतना गर्मी है अभी. ये मंथ ऑफ जनवरी है लेकिन धूप के वजह से गर्मी है. टायर्ड भी हूँ हम लोग. अभी लंच करेंगे देन तिन्नी अपने दोस्तों से मिलाएगी. राइट? That's a nice plantation. Everything is clean and neat. Good. It's a veg or non-veg? It's veg. It's not veg. It's non-veg. Okay, both options are there. So Varun, you are having veg. I'm agree. Anda. He's vegetarian. So we are done with our lunch. It's 2:15. 3:30 से कोराकल राइड है. ये जगह बहुत पीसफुल है. हाँ तो मेरी बेटी कुछ कर रही है, बाकी बाद में. Hey, tell me your name. What's your name? What's your name? Hey David, what's your name? अच्छा, Advit, what's your name? What's your name? Appy. ऐसा ही बिल्कुल. We have been to Billigund. Billigund is also kind of a scenery
यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। So it's so peaceful over here, huh? It's beautiful, lovely. I think this is a perfect place. This is one of the best place, I would say, for a weekend trip from Bangalore. Especially if you have childs with you. There are some indoor activities are also here. If you want to enjoy chess, Ludo, flying disc, all of these are available here, so people can come and enjoy. Right now कोई तो नहीं है यहाँ पे. Mutati, another nice picnic spot in the bank of Kaveri River, which is nearby place to visit from Bheemeshwari. You can definitely add Mutati into your plan in case you want to stay a night in Bheemeshwari JLR. Gullybury Nature Camp by Jungle Lodges is another nearby day trip option from here. ये काट कर देना उसको। It's 3:30 and we are going for Coracle ride. So that's the Kaveri River. वहीं पे Coracle ride होगा। पता सुना है कि यहाँ पे बहुत ऐसे ही कावेरी में बहुत क्रोकोडाइल्स रहता है, तो सुना है कि हर राइड में सबको क्रोकोडाइल तो देखने को मिलता है। देखते हैं अपना लक कैसा है। चलिए, ऐसे हम लोग को मिलने वाला है कोराकेल। तो बीच में ये जो 1:30 को as per their day package 1:30 you will get lunch and then from 3:30 Coracle. So in between you will get 2 hours of rest. So if you're traveling with your kids, you can utilize that time for their sleep so that they can charge up. तो तिन्नी ने भी वही किया, अभी तक मेरे गोद में ही सो रहा था। एक मिस्टेक शायद हम लोगों ने किया था, हम लोग 3 फैमिली आए हैं तो हम लोग 3 डे पैकेज ना लेके ये बेटर होता कि एक रूम बुक कर लेते तो तीनों बच्चा आराम से सो जाता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ़ यू गाइज आर कमिंग इन अ ग्रुप तो वैसे ही प्लान करना, एक रूम ले लेना, वो इजी होगा। क्या है ना, इतना सनी है ना और इतना सारे एक्टिविटीज़ एंड ऑल, बच्चे लोग थक जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप रूम ले लो। तो एवरीवन हैज़ टू वेयर दिस जैकेट, लाइफ जैकेट। Yeah. दिख गया फाइनली। अभी वहाँ पे उस साइड पे there is a stone, there a crocodile was lying. ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे मुंह खोल के। हाँ, आप ढूंढ रहे हैं और मिल रहा है और कि आसपास का पास में अगर मिलता है तो। अच्छा, গ্রিন গ্রিন দেখতে পাচ্ছি, है তোরা একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি, है ওইটা হচ্ছে That's अरे बाबा, You are liking it? तो कहाँ जा रहे हो अभी? ये क्या है? अभी कायाकिंग करेंगे। पहले बैठने का। So kids are not allowed. पीछे स्केल ले बेटा, थोड़ा पीछे। बेचारी किड्स।
तो आज का दिन पूरा भरा हुआ था. But I will refer this day package is little tiring, especially if you are traveling with your babies. So if you are planning for this kind of trip, for this jungle lodge in Bheemeshwari, and if you have senior people or babies with you, kids with you, then I will surely recommend you come here and stay here for at least one night. Otherwise, exhaustion of the transit, then all these activities will be a little tiring for your little one and for your elder one. 4 types of night stay options are available here: cottage, log house, tent and mud house, and tariffs are pretty reasonable. During your night stay, you can enjoy evening barbecue with campfire, early morning nature walk, etc. Booking link is given in the description box, but remember, pets are not allowed. So, कैसा लगा ये जंगल लॉज का ये रिसोर्ट एट विमेश्वरी? So I hope you guys have enjoyed the day with us. We are coming back with a special series on all these jungle lodges nearby Bangalore. How those jungle lodges are, what all other activities you can do. Like this one you are seeing earlier. We have already shown you the Gopinathan. You can check that out. Link is there. And I'm Dipmala signing off for now. Stay safe, be happy and travel more. अभी जाते जाते जल्दी से like this video and share it with your family and friends. If you are new to our channel, then click on the subscribe button and thanks for your support. And we'll be back with a new episode of Upbeat India on next Tuesday. Bye. Say